Hello everyone, welcome back to Nucleotides Biology Discuss. Today we have to continue our paper Genetics and this is your lecture number 28. This is basically for the plus 3 third semester students. And in this lecture we are going to start another new fresh topic of your another part or another unit of your plus 3 third semester, that is your mutation. And this is the mutation lecture number 1, and in this lecture we are going to discuss about the introduction and the types of mutation. Okay, so basically first of all we have to know what is this mutation हमें कहसु कहा के पहले हमको डिस्कस करवार अछि. ओके, सो म्यूटेशन हमें कहा के कहसु म्यूटेशन देखो म्यूटेशन रो माने हला दैट इज द सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन इट्स जेनेटिक मटेरियल. केनसे भी ऑर्गेनिज्म रे तार जदी सडनली किछिटा चेंजेस हला किंतरे चेंजेस हला तार जेनेटिक मटेरियल माने काना डीएनए. ओके, सो ताके कहूछ हमें म्यूटेशन सडन इनहेरिटेबल चेंजेस in its genetic material. Okay, genetic material रे एंता किछि सडनली चेंजेस है जिबा. जेनेटिक मटेरियल वाला जनरली हमें कहा के कंसीडर कर डीएनए के डीएनए रे सडन एंता किछि हमर चेंजेस है जिबा जेन चेंजेस रो द्वारा that changes will be or that may be transferred to the next generation. से changes ता next generation के transfer हे जे पारे. ओके, ताके को हमें काम लिखि that is called as mutation. Simply किछि जिबा mutation माने हला डीएनए रे किछि चेंजेस हबा. डीएनए रे केनता चेंजेस हबा. ओके, डीएनए जतबले देखु छो डीएनए जतबले कॉइल्ड हेसी रिपीटेडली डीएनए जतबले कॉइलिंग एंड रिकॉइलिंग हेसी सेनु काना बनसी क्रोमोसोम बनसी. राइट, सो क्रोमोसोम दैट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए. तो म्यूटेशन होउचे और डीएनए रे चेंजेस होउचे माने काना म्यूटेशन रे काना काना चेंजेस हे पारे केनता केनता प्रकार रे चेंजेस हे पारे जे देखमा देयर मे बी चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यूआरटी बना विथ रेस्पेक्ट टू कैन बेसिस रे हमर चेंजेस हे पारे. दैट चेंजेस में अकर ड्यू टू द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम. हम और जन क्रोमोसोम अछि क्रोमोसोम रो तार स्ट्रक्चर रे चेंज हे पारे. ओके, यदि स्ट्रक्चर रे चेंजेस हला और इफ यू सी द क्रोमोसोम रो तार नंबर रे चेंजेस हे पारे. हमर गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रे जेतकी नंबर रहबार कथा सेतकी नंबर रो कम हे गेला क्रोमोसोम या फिर बेसी हे गेला क्रोमोसोम बेले सेथरे भी प्रॉब्लम अछि. ओके, माने धरनी हो क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर देखो हम इनो पहला डेफिनेशन रो लिख लीजिए चेंजेस इन इट्स जेनेटिक मटेरियल. डीएनए रो चेंजेस के हमें कहू हमें म्यूटेशन बोली करी. यस, बट यो मैं फिर कहली जे हमर म्यूटेशन रे कार चेंज हे पारे क्रोमोसोम रो चेंज हे पारे. ओके, सो क्रोमोसोम कहा के नेकरी बनती सी. यस, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए. क्रोमोसोम दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए. दैट मींस क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर रे चेंजेस होचे माने काना किंति रे चेंजेस होचे डीएनए रे चेंजेस होचे. डीएनए कहा क्रोमोसोम कहा के नेकरी बनी छे डीएनए के नेकरी बनी छे. क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर यदि चेंजेस हबा दैट मींस केनो चेंजेस होचे डीएनए रे चेंजेस होचे. ओके, क्रोमोसोम रो नंबर हमर नु यदि देखमा जतकीटा डीएनए अछि यदि हमर गोटे ह्यूमन सेल बाहर करा गोटे ह्यूमन सेल रे 46 टा क्रोमोसोम अछि मींस 46 टा डीएनए प्रेजेंट अछि. यदि हमर नंबर चेंज हेला क्रोमोसोम रे माने डीएनए रो अमाउंट भी कमी जिबा. सो दैट क्रोमोसोम रो नंबर रे चेंजेस आले भी देयर मे बी occurrence of certain problem or certain disorder or there may be chances of appearance of new character. Okay, so in the changes with respect to its chromosome ro structure as well as structure of the number of the chromosome as well as changes with respect to agote kana changes nama changes with respect to DNA. ओके, डीएनए रे काना काना चेंजेस हे पारे डीएनए रो तार जन स्ट्रक्चर अछि डीएनए रो स्ट्रक्चर रे चेंजेस हे पारे. ओके, डीएनए जतले देखु छो डीएनए दैट इज हैविंग सो मेनी नंबर ऑफ जीन्स जीन रो नंबर रे चेंज हे पारे. ओके, नंबर ऑफ जीन्स जीन रो नंबर रे चेंजेस हे पारे. सपोज गुटे डीएनए रे 10 टा जीन सपोज फॉर एग्जांपल प्रेजेंट अछि 10 टा जीन. ओके, एंड से
ना एंता किछि डिजर्डर हला जेने कि गोटे जीन रो लॉस हे गला कि नुवा गोटे जीन रो एडिशन हे गला बले सेता भी काना कहमा जीन रो नंबर चेंजेस हे गला देयर मे भी हमर 10 टा थिला 10 टा नु 9 टा जदी हे गला बले गोटे जीन जदी एब्सेंट अछि जीन रो काना बनसी आरएनए रो प्रोटीन बनसी तो से पर्टिकुलर प्रोटीन हो बनि नै पारे राइट सो दैट डीएनए रो स्ट्रक्चर रे चेंजेस हे पारे या फिर नंबर ऑफ जीन रे चेंजेस हे पारे एज वेल एज सीक्वेंस ऑफ द जीन okay sequence of genes जीन रो गोटे पर्टिकुलर पोजीशन अछि क्रोमोसोम रो जेन पर्टिकुलर पोजीशन रे जीन प्रेजेंट से ताके कहसो हम काम बोली करी लोकस बोली करी कहसो एंड लोकस ता सब बेले फिक्स ता गोटे क्रोमोसोम रे केन जगह रे से गोटे पर्टिकुलर जीन देखबार के पामा दैट पोजीशन और दैट लोकस इज फिक्स्ड बट से लोकस रे जदी चेंजेस हला ओके से लोकस रे जदी चेंजेस हला सीक्वेंस रे ए बी सी डी चारटा जीन माने कर अछन बट हमर चेंजेस हेगला सीक्वेंस ए सी बी डी हेगला देयर मे बी चांसेस ऑफ occurrence of some kind of disorder or there may be appearance of the new character okay तो इटा के कहूछ हम काम लिख दैट इज द बेसिस ऑफ योर म्यूटेशन and if you see its historical background mutation that was reported by the concept of mutation that was reported by Hugo de Veris mutation ता रिपोर्ट किए करिथिले that was for the first time reported by Hugo de Veris देखो who is the father of mutation भी ऐसे that is your father of mutation okay question ऐसे who is the father of mutation that is your Hugo de Veris and Hugo de Veris जेतबेले mutation concept ता देथिले से टाइम रे से केन प्लांट ऊपर काम करथिले he worked on one of the most important plant जहा कि कहसी evening primrose okay और इतर बायोलॉजिकल नेम हला ओएनोथेरा लामार्कियाना okay so इनो भी क्वेश्चन है जे केन प्लांट ऊपर काम करथिले हुगो de Veris that is your ओएनोथेरा लामार्कियाना और इवनिंग प्राइमरोज बोली के कहा जासी and who is the father of mutation that is your Hugo de Veris who reported the mutation for the first time that is your Hugo de Veris okay तो इटा बेला हमर जनरल आईडिया अबाउट द म्यूटेशन तापर हमें एंटर करमा डिफरेंट टाइप्स ऑन डिफरेंट बेसिस रे हमें डिफरेंट ओके तो फर्स्ट में देखो टाइप्स ऑफ mutation on the basis of cells type of cells involved in the mutation okay देखो हमें एबे डिस्कस करमा टाइप्स ऑफ म्यूटेशन रो जेतबेले हमें टाइप्स देखुछु ओके टाइप्स बहुत सारा बेसिस तरह में डिवाइड करमा फर्स्ट बेसिस हमें नमा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व केन बेसिस रे ऑन द basis of type of cells involved in mutation रे हमर केन टाइप रो सेल इन्वॉल्व रहउचे सेता के बेस करी म्यूटेशन के हमें केतरा कैटेगरी डिवाइड करि परमा दुईटा कैटेगरी द फर्स्ट वन that is the somatic mutation गोटे हला हमर काना somatic mutation and another one that is your germinal mutation तो इनका भीतर डिफरेंस काना देखो सिंपली मैं कहि दूसम फिर लखमा आइते के somatic mutation माने काना if the mutation that occurs in the normal somatic cell दुईटा टाइप रे हमर पाखे सेल अछि होल बॉडी रो ओके होल बॉडी रो सेल के में दुईटा कैटेगरी डिवाइड करना गोटे सोमाटिक सेल और सिंपली वेजिटेटिव सेल बोली के भी कहि परमा and another one that is the germinal cell or we may say that sex cell जिन सेल माने सेक्स और जिन सेल माने हमर गैमेट फॉर्मेशन करबार तरे इन्वॉल्व रहउचन समान को कहउच हमें काम बोली के जर्मिनल सेल्स जने के स्पर्म हला ओवम हला दीज आर द जर्मिनल सेल्स और इमन को सेक्स सेल बोली के कहमा ओके
जदि हमर सेक्स सेल और जर्मिनल सेल रे स्पर्म रहला कि ओवम रहला सेमंतर डीएनए रे जदि किछि चेंजेस हला त से म्यूटेशन के कहमा जर्मिनल म्यूटेशन। ओके, एक्सेप्ट द स्पर्म एंड द ओवम। ओके, सेक्स सेल के और रिप्रोडक्टिव सेल के छाड़ी देकरी बाकी कैंसर सेल रे जदि हमर म्यूटेशन होचे ताके कहमा में काम बोली करी सोमाटिक म्यूटेशन। ओके, माने कर दिस इज माय स्किन रो मोर कैंसर भी सेल रे जदि हमर म्यूटेशन होचे सेताके कहमा सोमाटिक म्यूटेशन। If the mutation occur in the sperm, then that is called as your germinal mutation, right? So that is the basic difference somatic mutation और germinal mutation रो भीतर। तो फर्स्ट में देखो somatic mutation कहा कि कहूँ तो let me write the definition as well as details about the somatic mutation. Somatic mutation हमें कहा पूछो the mutation occurs in the somatic cell. The mutation that occurs in the DNA of somatic cells और इधर के कहमा वेजिटेटिव सेल बोली कि कहमा वेजिटेटिव सेल। ओके, मोर बॉडी रो सोमाटिक सेल केनटा माय फेस रे जतकी सेल रहला मोर बॉडी रे जतकी भी सेल्स रहला एक्सेप्ट स्पर्म में ओवम छाड़ी देले बाकी जतकी सेल रहला दैट इज कॉल्ड एज व्हाट सोमाटिक, दैट इज कॉल्ड एज योर सोमाटिक सेल। ओके, सपोज मोर फेस रो कैंसर सेल रो डीएनए रे किछि चेंजेस हला बेले से ताकि कहमा में काम बनी कि सोमाटिक म्यूटेशन बनी कि कहमा। तो सिजन म्यूटेशन हेबा म्यूटेशन वाले काना हेबा देखो पहला गुटे जिनिस में कहि देखु जे तुमको जे हमर जदि एटा डीएनए अछि डीएनए रो काना बनसी आरएनए एंड आरएनए रो बनसी हमर काना प्रोटीन, राइट? जदि डीएनए रे किछि चेंजेस हला काना हेबा देखो तो याद जदि हमर डीएनए रे किछि चेंजेस हला सपोज डीएनए दैट गॉट चेंज डीएनए रे किछि जदि चेंज हला आरएनए रे चेंज हबा आरएनए रे जदि चेंज हला त हमर जन प्रोटीन बनुतला दिस वन इज द नॉर्मल प्रोटीन तो इटा हबा हमर एबनॉर्मल प्रोटीन। ओके, दिस विल बी योर एबनॉर्मल प्रोटीन जेंटा बनबार कथा से प्रोटीन नाही बनिकरी अलग गुटे टाइप रो प्रोटीन बनि जिबा जेंटा की दैट विल लीड्स टू सम काइंड ऑफ डिजॉर्डर। हमर बॉडी रे जदि हमर सेल रे हमर मेलानिन पिगमेंट जेन प्रोडक्शन होचे सता जदि सेतरर जदि हमर डीएनए रे मेलानिन प्रोडक्शन रो लागि जेन जीन रिस्पांसिबल है से डीएनए पार्ट रे जदि किछि चेंजेस हला त हमर बॉडी रो कलर रे चेंजेस हमर चांसेस अछि। बुझियला कि नहीं? ओके, तो हमर कहला जे म्यूटेशन दैट occurs in the DNA of the somatic cells, okay, or the cells of any body parts, cells of any body part, okay, except sperm and ovum छाड़ी बाकी जगह रे। okay, so second somatic cell रे जदि mutation हबा से mutation काना हबा that will be restricted to a particular area that will only seen in the same generation। मोर बॉडी रे जदि मोर स्किन रो सेल रे किछि म्यूटेशन हुई तो सेम म्यूटेशन रे खाली मोर पर्टिकुलर एरिया रे देखबार के पैमा और अदर पार्ट्स रे देखबार के नै पाउ से म्यूटेशन और से म्यूटेशन टा मोर जदि ई जगह रे किछि चेंजेस सही छी मोर ई जगह रो सेल टा नेक्स्ट जनरेशन के जीवा के मोर स्किन सेल टा नेक्स्ट जनरेशन के जीवा के नहीं हमर नेक्स्ट जनरेशन बनाबर लगी के रिस्पांसिबल है स्पर्म फीमेल केस रे ओवम। सो दैट जदि कैंसर ऑर्गेनिज्म केस रे म्यूटेशन होचे केनो सोमाटिक सेल रे तो सेम म्यूटेशन टा रेस्ट्रिक्टेड हिबे पर्टिकुलर एरिया रो लागि अलगा कैंसर जगह रे में देखबार के नै पौ बुझी पल्लो। सो सोमाटिक म्यूटेशन दैट इज restricted to a particular area of the body part, this one that will be restricted to a particular body part कैंसर गोटे बॉडी पार्ट रो गोटे पर्टिकुलर एरिया रे दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड ठीक रहि जेबो एंड दिस विल नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट विल नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन के ई ट्रांसफर नहीं हुए केन म्यूटेशन द सोमाटिक म्यूटेशन, somatic mutation will not transfer to the next generation।
बुझियला ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हमर काना दैट इज योर जर्मिनल म्यूटेशन डिस्कस करो जर्मिनल म्यूटेशन माने काना द म्यूटेशन occurs in the germinal cells germinal mutation that occurs in its germinal cell or the sex cell mutation that occurs in the germinal cell के otherwise कहमा सेक्स और रिप्रोडक्टिव सेल जाना कहले चलबा रिप्रोडक्टिव सेल जेन सेल माने रिप्रोडक्शन रे इन्वॉल्व रहउछन जेंते कि हमर हला स्पर्म हला ओके ओवम हला सो स्पर्म सेल रे जेन डीएनए अछि तार किछि चेंजेस हला ओवम सेल रो भितरे जेन डीएनए अछि सेतरे किछि जदी चेंजेस हला कान that changes will transport to the next generation जेते बेले गोटे स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करसन जाइगोट बनसे से जाइगोट रो हमर काना बनसी एम्ब्रियो एम्ब्रियो रो गोटे नवा इंडिविजुअल बनसी है ना जदि स्पर्म रे किछि चेंजेस हला त जाइगोट रे चेंजेस हबा जाइगोट रे जदि किछि चेंजेस हला नेक्स्ट जनरेशन जन बड़ी असबा न्यू इंडिविजुअल जन असबा से न्यू इंडिविजुअल रे भी चेंजेस देखबार के पैमा में सो दैट जदि म्यूटेशन टा स्पर्म सेल रे होचे कि ओवम सेल रे होचे so that mutation will transfer to its next generation okay so this is not restricted to sperm or ovum only this will be transferred to the next generation it can transfer to the next generation ओके नेक्स्ट जनरेशन नेके इ काना हबा ट्रांसफर ही जाई परबा बिकॉज़ स्पर्म ओवम नेक्स्ट जनरेशन रो लागी रिस्पांसिबल ओके एटा गला हमर कहा के बेस करी करी केन टाइप रो सेल इन्वॉल्व रहउचे इन द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन सता के बेस करी करी हमें डिवाइड करला वन इज द सोमैटिक म्यूटेशन एंड अनदर वन दैट इज योर जर्मिनल म्यूटेशन ओके next our another type of mutation जेंटा की कहउछा में on the basis of its origin on the basis of its origin केनता करी origin होउछे म्यूटेशन रो सेता के बेस करी करी हमें काना करबा म्यूटेशन के दुईटा कैटेगरी डिवाइड करि परबा वन ऑफ दैट म्यूटेशन जेंटा की कहसो हमें काम वाली करी दैट इज योर हेरेडिटरी म्यूटेशन एंड आउ गोटे टाइप रे म्यूटेशन जेंटा की कहउछो एक्वायर्ड म्यूटेशन वन बाय वन डिस्कस करबा देखा गोटे हला हमर हेरेडिटरी म्यूटेशन हेरेडिटी माने ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन if the mutation that passed from its previous generation to the next generation गोटे प्रीवियस जनरेशन रो नेक्स्ट जनरेशन नेके जदी हमर म्यूटेशन टा ट्रांसफर होचे तो ताके कम में काम बोले करी हेरेडिटरी म्यूटेशन ओके if the mutation that is passed from the previous generation if mutation is passed from its previous generation माने कण तर फादर मदर ओके तर फादर रो या फिर तर मदर रो जदी हम ट्रांसफर हेतिबा तो फादर रो मदर रो हमन के काना ट्रांसफर हेसी फादर नो स्पर्म मदर नो ओवम दुयन कर फर्टिलाइजेशन हेसी देन वी आर ट्रांसफरिंग हमन के कन्वर्ट हेसी सटा है ना तो हमर म्यूटेशन जदी हमर प्रीवियस जनरेशन रो ट्रांसफर होचे तो ताके को हम हेरेडिटरी म्यूटेशन जेंता कि फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस हमें डिस्कस करूतला कलर ब्लाइंडनेस बाबद फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस हमको हेबा कि न वे दैट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ आवर पेरेंट्स हमर पेरेंट रे जदी कलर ब्लाइंडनेस डिजॉर्डर अछि देन ओनली इट विल ट्रांसफर ओके हमर फादर या फिर मदर पाखे जदी से पर्टिकुलर जीन अछि देन ओनली इट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन अदरवाइज इट विल नॉट ट्रांसफर ओके सिंस द आउट एग्जांपल पढ़ितला में काम लेके दैट इज द हीमोफिलिया ओके हीमोफिलिया हला कलर ब्लाइंडनेस हला मन को हम हेरेडिटरी म्यूटेशन
आउट आसला हमर काना एक्वायर्ड म्यूटेशन आउट आसला एक्वायर्ड म्यूटेशन एक्वायर्ड माने काना अपना बाटा अख्तियार करबाटा के कहसी एक्वायर्ड हमर नु गोटे पार्टिकुलर डिसऑर्डर गोटे पार्टिकुलर चेंजेस ऑफ द पार्टिकुलर म्यूटेशन ता बार्थ रो नै थई देखो हेरेडिटरी म्यूटेशन यदि हेरेडिटरी होचे पहले म्यूटेशन ता दैट विल बी प्रेजेंट फ्रॉम बार्थ रु थिबा जन्म हला बेलु ही हमर पाखे म्यूटेशन ता थिबा कलर ब्लाइंडनेस ता जन्म हला बेलु थिबा हेमोफिलिया ता जन्म हला बेलु थिबा दैट इज योर हेरेडिटरी म्यूटेशन बट यदि म्यूटेशन ता जन्म हला बेल के बार्थ टाइम रे इफ दैट म्यूटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी बट in our lifetime we are acquiring some kind of disorder in our DNA or in our genetic material ताके को हम acquired mutation okay for example cancer by birth our पाखे cancer नहीं थई but there is certain gene one of the gene which is involved in the cancer जंडा के कहसी oncogene बोली करी कहस so oncogene ता रे जदी किछि चेंजेस होउचे oncogene एक्चुअली हमर समस्तंकर पाखे अछि किन फॉर्म रे थिसे प्रोटो ओनकोजिन फॉर्म रे प्रेजेंट थिसे जदि से प्रोटो ओनकोजिन रो किछि चेंजेस होउचे दैट विल कन्वर्ट इट इनटू व्हाट ओनकोजिन एंड दैट ओनकोजिन विल लीड्स टू कैंसर एंड कैंसर हमको सोचना है by exposing our body to certain chemicals or other factors हमें हमर बॉडी के किछि अदर फैक्टर्स द्वारा जदि एक्सपोज करू छु सपोज फॉर एग्जांपल हमर माउथ कैंसर होचे by chewing the tobacco जदि टोबैको चुइंग करू छु माउथ कैंसर होचे से जन टोबैको चुइंग को चुइंग केमिकल आसुचे दैट केमिकल will leads to the disorder in the oncogene so that will leads to cancer okay so हमर बॉडी रे जन कैंसर होचे दैट कैंसर डिपेंड अपन कैंसर कहार ऊपर डिपेंड कर some of the carcinogenic agent कैंसर कॉजिंग एजेंट्स ऊपर डिपेंड करसी बहुत सारा डिफरेंट कैंसर कॉजिंग एजेंट्स माने अछन फिजिकल अछन केमिकल्स अछन बहुत सारा फिजिकल जिंदा कि हमर किछ रेडिएशन हला जदि हमें ऑलवेज जदि हमें काना करछु यूवी रेडिएशन रो जदि एक्सपोजर आसु एला हमर स्किन कैंसर हबा चांसेस अछि बिकॉज़ हमर स्किन ता जनरली यूवी रेडिएशन द्वारा एक्सपोज नहीं होते आगरु बट हमें डे टू डे लाइफ रे जदि हमर बहुत रिपीटेडली हमर बॉडी टा स्किन टा जदी यूवी रेडिएशन रो कांटेक्ट रे आसवा यूवी रेडिएशन रो कैपेसिटी अछि इट कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए हमर जन जीन रो स्ट्रक्चर अछि से जीन रो स्ट्रक्चर के चेंज कर दे पारवा एंड से जीन टा माने करून प्रोटो ओनकोजीन रो चेंजेस हे गला then that will be converted into oncogene and that oncogene will leads to cancer तो कैंसर हला के डायबिटीज हला दैट वी एक्वायर्ड इन आवर लाइफ टाइम भीतर में से एक्वायर करू छु and that is occur due to some disorder in our gene in our lifetime and that will not transfer to the next generation मोर पाखा जदी कैंसर अछि then I will not transfer this cancer disorder to my next generation more next generation के मैं कैंसर ट्रांसफर नहीं कराए के भी ने कहबो जे कैंसर will transfer from one generation to another generation cancer is not a genetic disorder which will transfer yes that is a disorder in the structure of the gene and that is acquired by us when we expose to several factors but if I have the cancer then I will not transfer the cancer to the next generation okay so acquired mutation कहा के कहू छु mutation occurs or the mutation that is not present by birth mutation that is not present by birth janam value mutation 9 okay that is acquired by exposing our body to certain factors to certain chemicals or other factors किछटा chemical द्वारा और किछटा other factor द्वारा यदि हमर बॉडी के expose करला then there may be chances of changes in the
gene or changes in the chromosome or changes in the DNA. ताकि कहमा acquired mutation. This will not pass from its parent. That is not transferred to the next generation. Not transfer. Okay, not transfer from, or that will not transfer to next generation. ना next generation के transfer हेबा ना previous generation रू आसबा acquired mutation ता नहीं आसे acquired mutation ता नहीं जाए next generation के. Okay, for example, write the example here. Okay, one of the ideal example is that is your cancer. Cancer is a acquired mutation. Okay, बुझी पारला इटा में कहा के बेस करिकरी नला, that is on the basis of its origin. केना को originate होचे भारत रो originate होचे ना भारत रो परे originate होचे. ओके, से बेसिस रे में डिवाइड कला hereditary mutation आ गोटे हला हमर काना that is your acquired mutation. ओके ओके, देखो आ गोटे बेसिस रे हमें डिवाइड करमा म्यूटेशन के डिफरेंट टाइप्स रे. ओके, सो आ गोटे हला on the basis of chromosome structure chromosome रो स्ट्रक्चर के नामा, क्रोमोसोम रो नंबर के कंसीडर करमा, क्रोमोसोम नंबर एज वेल एज जीन रो स्ट्रक्चर के भी हमें कंसीडर करमा. ओके, ये तक के बेस करी जदि हम जिमा म्यूटेशन के हमें ब्रॉडली तीनटा कैटेगरी रे डिवाइड करू छु. ओके, ई बेसिस रे म्यूटेशन के हमें तीनटा कैटेगरी रे डिवाइड करू छु. केन बेसिस रे? on the basis of chromosome number, chromosome structure as well as gene structure. Kala tinta type. The first one, that is the genometric mutation. Kudela amar kana genometric mutation. Genometric mutation. Genometric mutation, that is with respect to changes with respect to chromosome number. Okay, genometric mutation हमें काहे कहू छु? The changes with respect to chromosome number. Chromosome number जदि changes होचे ताके कहमा में genometric mutation बोली गई. Okay, तापरे असला another one, that is chromosomal aberration. Chromosomal aberration. Chromosomal aberration हमें कहा के कहमा जे that is changes with respect to structure of the chromosome. Chromosome रो structure जते बोले देखु छु, chromosome रो structure is made up of DNA. एंड डीएनए रे गोटे गोटे सेगमेंट के क्वेश्चन जीन. ओके, तो जीन रो ई जगह रे हमर जीन रो नंबर रे या फिर जीन रो सीक्वेंस रे जदी चेंजेस हला ताके कहमा में क्रोमोसोमल एबेरेशन. एंड द लास्ट वन, दैट इज द जीन म्यूटेशन. जीन म्यूटेशन माने काना? जीन कहा के नेकरी बनि छै? जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए. जदी हमर डीएनए रो स्ट्रक्चर रे चेंजेस हला, that is known as gene mutation. DNA structure रे या फिर DNA रे हमर न्यूक्लियोटाइड्स में ऑप्शन से न्यूक्लियोटाइड्स मन कर सीक्वेंस रे चेंजेस हला और सेमन को नंबर रे यदि चेंजेस हला तो ताके कहमा में जीन म्यूटेशन. तीनटा कैटेगरी रे डिवाइड करना, वन बाय वन हमें डिस्कस करते चलबा. देखो जीनोमेटिक म्यूटेशन, पहला देखो जीनोमेटिक म्यूटेशन. जीनोमेटिक म्यूटेशन, that is the mutation with respect to mutation. Don't worry, लिखि साला पर साइड दे में you can write this. Mutation with respect to कहा के बेस करी करे? On the basis of the changes in chromosome number. हमर क्रोमोसोम रो नंबर रे चेंजेस से जिबा तो ताके कहमा में जीनोमेटिक म्यूटेशन. ओके, सपोज फॉर एग्जांपल मोर पाके 46 टा क्रोमोसोम अछि. But if in my next generation, से नेक्स्ट जनरेशन रे जदी 46 जगह रे 47 क्रोमोसोम हे गला या फिर 44 क्रोमोसोम हे गला या फिर 45 क्रोमोसोम हे गला ताके कहमा में जीनोमेटिक म्यूटेशन. ओके, सो जीनोमेटिक म्यूटेशन के हमें दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड करि पारमा. ओके, इदा के हमें दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड करि पारमा. गोटे हला हमर एन्यूप्लॉइडी आ गोटे हला यूप्लॉइडी. गोटे हला एन्यूप्लॉइडी
देखो प्लॉइडी वर्ड ता जेनु वर्ड यूज हेसी दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द सेट ऑफ क्रोमोसोम रो सेट के हमें प्लॉइडी बोली करी कहसु और हमर असला एन्यूप्लॉइडी एंड अनदर वन दैट इज द यूप्लॉइडी आउट असला यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी दुईटा कैटेगरी डिवाइड करछु का के जीनोमेटिक म्यूटेशन के यदि हमर वन और फ्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम रे चेंजेस हवा ओके गुटे दुईटा क्रोमोसोम रे यदि हमर चेंजेस होचे ताके कहमा में एन्यूप्लॉइडी okay if there is changes with respect to the change in one or few number of chromosome मोर पाखे 46 टा क्रोमोसोम अछि 46 जगह 45 हे गला कि 44 हे गला केतेटा क्रोमोसोम 44 हले केतेटा लॉस हला मोर पाखे दुईटा 45 क्रोमोसोम यदि मोर पाखे हला बेले मोर केतेटा क्रोमोसोम लॉस हला गुटे ओके वन और फ्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम रो यदि लॉस होछि और मोर जगह 46 जगह 47 मोर निके क्रोमोसोम मसला या फिर 48 क्रोमोसोम मसला बेले सेनो हमर कान हला एडिशन ऑफ वन और टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वन और फ्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम रो एडिशन हवा या फिर डिलीशन जदी होचे बेले ताके कहू हमें काम बोली करी एन्यूप्लॉइडी ओके सो एन्यूप्लॉइडी हमर काना होचे देयर विल बी चेंजेस इन वन और फ्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस इन one or few number of chromosome okay one or few number of chromosome रे जे हमर चेंजेस हवा ताके कहमा एन्यूप्लॉइडी आउट असला हमर काना दैट इज योर यूप्लॉइडी यूप्लॉइडी माने काना टोटल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम रे जदी चेंजेस हुए मोर पाके 46 अछि केतेटा सेट ऑफ क्रोमोसोम अछि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम गोटे 23 आ गोटे 23 23 23 टाके गोटे गोटे सेट बोलसो ना मोर पाके टू सेट ऑफ क्रोमोसोम अच्छे बट सडनली मोर पाके थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम जदी पले आसला हबा केनता करी मैं डिस्कस करबा के किछटा प्लान केस रे मैं डिस्कस करब जदी हमर टू सेट रहउचे जनरली आ गोटे सेट एक्स्ट्रा ऐड हे गला या फिर गोटे सेट कमी गला तो सेटा के कहमा में काम बोले करी यूप्लॉइडी न गुटे के दुईटा क्रोमोसोम रो कथा नै पड़ी ये टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम रो कथा पड़ी छै हमर पाके 46 क्रोमोसोम अछि 46 क्रोमोसोम रे सब क्रोमोसोम केन कंडीशन अछन पेयर कंडीशन रे एक नंबर ता दुईटा दुई नंबर ता दुईटा तीन नंबर ता दुईटा एंड करी करी 23 नंबर तक जिमा सब दुईटा क्रोमोसोम अछन ओके तो पहला 1 2 3 4 रु करी करी में 23 टा क्रोमोसोम गुटे सेट वाला है तके देन आउ गुटे 1 2 3 4 5 करी करी एंड करी में 23 टा क्रोमोसोम हमर पाके केतेटा सेट ऑफ क्रोमोसोम अछि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम बट ड्यू टू सर्टेन डिसऑर्डर इफ आई गॉट थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम और पाके तीनटा सेट ऑफ क्रोमोसोम एक नंबर ता दुईटा तीनटा दुई नंबर ता तीनटा तीन नंबर ता तीनटा एंता करके 23 नंबर क्रोमोसोम तक जदी जिमा सब क्रोमोसोम मोर पाके केते केतेटा अछि तीन तीनटा अछि तो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम जदी चेंजेस हे जिवा ताके कहमा में काम बोली करी यूप्लॉइडी एग्जांपल नै करिया मैं जा डिस्कस करमा के ओके तो यूप्लॉइडी रे लिख दो चेंजेस इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस इन complete set of chromosome टोटल हमर सेट ऑफ क्रोमोसोम रे जदी चेंजेस हवा ताके कहमा में यूप्लॉइडी बोली करी कहमा ताप रे देखो एनोप्लॉइडी के फिर हमें डिवाइड करी परमा दुईटा कैटेगरी ओके गोटे साइड रे लिखू एन्यूप्लॉइडी आउट हला हमर यूप्लॉइडी ओके एन्यूप्लॉइडी रे के भी हमें डिवाइड करी परमा दुईटा कैटेगरी रे गोटे हला हाइपोप्लॉइडी आ गोटे हला हाइपरप्लॉइडी गोटे हला हाइपोप्लॉइडी एंड अनदर वन दैट इज हाइपरप्लॉइडी हाइपरप्लॉइडी हाइपोप्लॉइडी कहा के कहमा हाइपरप्लॉइडी कहा के कहमा पहला एन्यूप्लॉइडी कहा के कहू आथरे कह दिउ सुनो यदि हमर वन और फ्यू नंबर ऑफ क्रोमोसोम रे चेंजेस हवा गुटे दुईटा रो लॉस हवा कि एडिशन हे जिबा ताके कहमा में एन्यूप्लॉइडी हाइपो माने काना कम हाइपर माने काना बेसी यदि हमर लॉस होउचे क्रोमोसोम ता कमी जाउचे 46 रहबार कथा 45 हे गला दैट इज कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी ओके हाइपो माने कमी जिबाटा हाइपर माने बॉडी जिबाटा यदि मोर पाके 46 रहबार कथा मोर पाके असला 48 टा क्रोमोसोम नंबर बढ़ी गला बेले ताके कहमा में काम लिखरी हाइपरप्लॉइडी एग्जांपल जिमा केनता करी है से पूरा डिस्कस करमा के गले
Okay, don't worry about this. So hypoploidy रे amar kana होचे, there will be in amar kana haba deletion haba or loss of one or few chromosome, one or few chromosome रो जदि amar loss होचे गुटे किंबा दुई किंबा तीन एंड किछिटा chromosome रो जदि loss होचे, that is called as hypoploidy बोली करी कहूछु. Hyperploidy में कहा कि कहमा addition हवा. Okay, here there will be addition of one or few chromosomes, ताकि कहमा में काम बोली करी, that is called as your hyperploidy. इटा गला हमर कहार बाबत रे डिस्कस कला एनुप्लॉइडी बाबत रे. एबे डिस्कस करो हमें कहार बाबत रे, that is your euploidy बाबत रे. euploidy. ओके, देखो euploidy के हमें दुईटा कैटेगरी डिवाइड करी पारमा. वन ऑफ द कैटेगरी जहा के कहसो हमें काम बोली करी ऑटोपोलिप्लॉइडी. ऑटोपोलिप्लॉइडी हमर जदी सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम रो मल्टीप्लिकेशन होछि, मोर पाखे गुटे ऑटोसोम थिला, मोर ह्यूमन रो ऑटोसोम मोर पाखे আছে, मोर ऑटोसोम रो जेन सेट আছে सेटार खाली जदी मॉडिफिकेशन मल्टीप्लिकेशन होचे ताके कहमा ऑटोपोलिप्लॉइडी. हमर पाखे जेन क्रोमोसोम আছে, जेन सेट ऑफ क्रोमोसोम আছে सेटार जदी मल्टीप्लिकेशन होचे, दैट इज ऑटोपोलिप्लॉइडी. बट एंता भी देखबार के मिलसी हाइब्रिडाइजेशन हेसी. माने कर हमें व्हीट प्लांट और राय प्लांट. ओके, व्हीट और राय के कहसे सिकल बोली करी कहसी. ओके, व्हीट पाखे जेन सेट ऑफ क्रोमोसोम আছে, माने कर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम सपोज. ओके, डिफरेंट कैटेगरी আছে, माने कर टू सेट ऑफ क्रोमोसोम हमर আছে काटा व्हीट रु आसला, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम माने कर राय रु आसला. ओके, एंड नो गोटे इंडिविजुअल फॉर्मेशन हला व्हीट और राय रो हाइब्रिडाइजेशन करला. ओके, व्हीट रो ना काना ट्रिटिकम एंड राय रो ना काना, राय रो ना होचे ट्रिटी हमर सिकल. सिकल और ट्रिटिकम मिसे करी ताके कमा ट्रिटिकल बोली करी कहजस. सिकल सीरियल जेंडर राय रो ना है और व्हीट रो ना हला ट्रिटिकम. ट्रिटिकम और सिकल के मिसे करी ताके कहसे ट्रिटिकल. ट्रिटिकल रे हमर सम सेट ऑफ क्रोमोसोम काहाटा थिबा व्हीट रो थिबा, सम सेट ऑफ क्रोमोसोम काहाटा थिबा हमर राय रो थिबा. तो सनो जेन सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई हला, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम मल्टीप्लाई हला के नहीं. हमर व्हीट रो दुईटा सेट ऑफ क्रोमोसोम, सपोज फॉर एग्जांपल व्हीट रो किछि सेट ऑफ क्रोमोसोम और राय रो किछि सेट ऑफ क्रोमोसोम अछि, ताके कहमा में काम बोली करी, दैट इज कॉल्ड एज एलोपोलिप्लॉइडी. एलोपोलिप्लॉइडी. ओके, ऑटोपोलिप्लॉइडी रे हमर सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम रो मल्टीप्लिकेशन हबा, बट एलोपोलिप्लॉइडी रे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम. डिस्कस करमा आइतर बाबत रे. ओके, जस्ट मी इंट्रोडक्शन रो लागी सबु जनरल आईडिया दे दउ छम, वन बाय वन हम डिस्कस करबा. सो ऑटोपोलिप्लॉइडी रे देयर विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम. whereas allopolyploidy रे there will be multiplication of different set of chromosome, different set of chromosome. different set of chromosome रे जदि मल्टीप्लिकेशन हवा ताके कहमा एलोपोलिप्लॉइडी. सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम रे मल्टीप्लिकेशन हवा ताके कहमा में काम बोली करी ऑटोपोलिप्लॉइडी. इटा गला हमर कहार बाबत रे, दैट इज ऑल अबाउट आवर जीनोमेटिक म्यूटेशन. ओके, नेक्स्ट हमको डिस्कस करबार छे कहार बाबत रे, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू योर क्रोमोसोमल एवरेशन कहा के कहजस. क्रोमोसोमल एवरेशन हमें जते बेले देखु छु, क्रोमोसोमल एवरेशन हमें कहा के कहू छु. क्रोमोसोमल एवरेशन रो माने हला दैट इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हमर क्रोमोसोम रो जन स्ट्रक्चर अछि, से स्ट्रक्चर जदी चेंजेस हला ताके कहू छु हमें काम बोली करी, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एवरेशन. ओके, एंड क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर जते देखु छु, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ व्हाट? Chromosome, that is made up of genes. So many number of genes they are present in the chromosome. Chromosome that is made up of genes. Made up of genes. जेहेतु बहुत सारा genes द्वारा बनी छी हमर के, that is your chromosome. तो इन हमर कहार चेंजेस हवा, चेंजेस with respect to gene रो नंबर या फिर gene रो सीक्वेंस रे चेंजेस हवा. ओके,
तो इन हमर कहार चेंजेस हबा जीन रो नंबर रे चेंजेस हबा या फिर जीन रो सीक्वेंस रे चेंजेस हो जेबा ओके जीन रो नंबर या फिर जीन रो सीक्वेंस रे जे चेंजेस हला दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबेरेशन एंड क्रोमोसोमल एबेरेशन के हमें डिफरेंट कैटेगरी रे डिवाइड करना वन ऑफ दैट कैटेगरी जहा के क्वेश्चन डिलीशन बोली करी माने जीन डिलीट हो जिबा गोटे क्रोमोसोम रे मानकर सपोज 1000 जीन थिला बट से भितर किछटा जीन रो डिलीशन हे जिबा लॉस हे जिबा जीन रो लॉस हे जिबा ताके कमा डिलीशन और किछटा जीन ऐड हे जिबे मानकर हमर गोटे क्रोमोसोम रे ए बी सी डी जीन अछि बट तने हमर बी जीन आ गोटे ऐड हे गेला ए बी बी सी डी हे गेला बी दुईटा हे गेला तो बी जीन काला डुप्लीकेट करि गेला ताके कमा डुप्लीकेशन इधर बाबद रे आके में डिस्कस करबार अछि तने स्ट्रक्चर काटी करी सब बतानी तब 3 नंबर दैट इज इन्वर्सन इन्वर्सन रे काना हबा पोजीशन रे चेंजेस हे जेबा जीन रो सीक्वेंस रे चेंजेस हे जेबा ए बी सी डी अछन बट ए सी बी डी हे गेला सी ओ बी तकर सीक्वेंस रो तकर जन पोजीशन अछि से पोजीशन रा इन्वर्ट कर देले चेंज कर देले ताके कहमा में इन्वर्सन बोलिकरी कहमा एंड आ गोटे कांसेप्ट जहा के कहै छै से ट्रांसलोकेशन 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 कहा के कहा जैसे देखो गोटे कांसेप्ट हमें जानि छु क्रॉसिंग ओवर दैट अकर्स बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम ओके बट समटाइम्स किछटा हमर अनयूजुअल फीचर्स भी देखबार के मिलसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन जे हमर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी तकर सेगमेंट एक्सचेंज कर देबे जदि हम नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भीतर एक्सचेंज हिबा सेगमेंट ताके कहमा में काम बोलिकरी ट्रांसलोकेशन बोलिकरी कहमा डिस्कस करमा तर टाइप्स भी हमें डिस्कस करमा ओके एटा गला हमर काना दैट इज योर क्रोमोसोमल एबेरेशन लास्ट असला हमर दैट इज योर जीन म्यूटेशन तक जीन म्यूटेशन हमें जेतले देखु छु जीन म्यूटेशन रे हमर काना बा दैट इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू जीन स्ट्रक्चर ओके changes with respect to gene structure हमर जीन रो स्ट्रक्चर रे चेंजेस हबा जीन रो स्ट्रक्चर रे चेंजेस बा माने कान जीन कान है दैट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन कान है दैट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए डीएनए रो सेगमेंट है डीएनए रो सेगमेंट है एंड डीएनए इज मेड अप ऑफ व्हाट डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओके तो जीन म्यूटेशन रे इन कहार चेंजेस हबा न्यूक्लियोटाइड्स रे चेंजेस हबा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जॉइन हले डीएनए 1c एंड डीएनए रो गुटे सेगमेंट ऑफ द डीएनए के कहू हमें काम बोली जीन बोली करी कहू ओके जीन रो स्ट्रक्चर रे चेंजेस हबा माने काना डीएनए रो स्ट्रक्चर रे चेंजेस हबा डीएनए रो स्ट्रक्चर कहार द्वारा बनी छे न्यूक्लियोटाइड द्वारा बनी छे तम और जीन म्यूटेशन रे कहार चेंजेस हबा द चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोटाइड्स रो नंबर ओके न्यूक्लियोटाइड जतरा रहबार कथा तार नंबर केन टाइप रो न्यूक्लियोटाइड जॉइन होचे तार पर भी डिपेंड करूचे यदि हमर जेन टाइप रो न्यूक्लियोटाइड्स हमर किछटा न्यूक्लियोटाइड्स रे हमर प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस लागि दिसी आ किछि तरह पाइरिमाइडिन लागि दिसी ओके जेन देखि हमर नाइट्रोजनस बेस ऊपर डिपेंड करूचे एडेनाइन ग्वानिन होचन प्यूरिन थाइमिन साइटोसिन यूरासिल होचन हमर काना जलिजर पाइरिमाइडिन तो से जेन टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड अछि और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अछि और पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ओके न्यूक्लियोटाइड रो पोजीशनिंग हमें जतले करसु एटीजीसी करसु तो एटीजीसी जदी ना रही करे एटीसीजी हे गला चेंजेस हे जेबा ताके कहमा में जीन म्यूटेशन बोली करी कहमा देखो जीन म्यूटेशन के मैं ब्रॉडली दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड करसु नेक्स्ट पेज रे करू छ जीन म्यूटेशन के दुईटा टाइप रे डिवाइड करसु gene mutation is divided into two categories. One is the substitution mutation and another one that is the frame shift mutation दुईटा कैटेगरी डिवाइड करबा सब्स्टिट्यूट करबा बोले ताके कहमा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन ओके माने कर गोटे जगह रे एडेनाइन लागि छै से जगह रे एडेनाइन न लागि करे से डीएनए रे एडेनाइन जगह रे ग्वानाइन लागि गला ओके एडेनाइन गुटे काने प्यूरिन है ग्वानाइन गुटे काने प्यूरिन है गुटे प्यूरिन लागितला से जगह गुटे प्यूरिन लागि गला
सब्स्टिट्यूट हे गला ओके ताके कहमा में सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन गोटे जगह रे हमर थाइमिन लागि थिला बट से जगह रे एडेनाइन लागि गला थाइमिन टा काने पाइरिमाइडिन बट से जगह रे लाइक गला एडेनाइन काने प्यूरिन और पाइरिमाइडिन भितरे काना हला चेंजेस हे गला ताके कहमा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन बोली करी ओके सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के दुईटा कैटेगरी रे डिवाइड करा जायसी one of that category जाके कहा जायसी हमर that is your transition mutation and another one that is the transversion transition and transversion दुईटा टाइप रे म्यूटेशन ट्रांजिशन म्यूटेशन कहा के कहमा जदि हमर प्यूरिन टा जगह रे आगुटे प्यूरिन लागि गला या फिर पाइरिमाइडिन जगह रे आगुटे पाइरिमाइडिन लागि गला जेन जगह रे एडेनाइन लागि दिला से जगह रे ग्वानिन लागि गला और जेन जगह रे ग्वानिन लागि दिला से जगह रे एडेनाइन लागि गला बोले ताके कहमा ट्रांजिशन म्यूटेशन जेन जगह रे थाइमिन लागि दिला से जगह रे साइटोसिन लागि गला और जेन जगह रे साइटोसिन लागि दिला से जगह रे थाइमिन लागि गला तेरे के कहमा ट्रांजिशन म्यूटेशन प्यूरिन और पाइरिमाइडिन सब्स्टिट्यूट करबे ए जगह रे जी लागि जइतबा जी जगह रे ए लागि जइतबा टी जगह रे सी लागि जइतबा और सी जगह रे टी लागि जइतबा तरे ताके कहमा में काम लिखले ट्रांजिशन म्यूटेशन डिस्कस करमा के ट्रांसवर्सन जदि हम और गोटे जगह रे प्यूरिन लागितला बट प्यूरिन जगह रे लागि गला गोटे पाइरिमाइडिन और गोटे जगह रे पाइरिमाइडिन लागितला से जगह रे लागि गला गोटे प्यूरिन आसी करी ताके कहमा में ट्रांसवर्सन म्यूटेशन माने कर एडेनाइन लागितला या फिर ग्वानिन लागितला से जगह रे गोटे थाइमिन या फिर साइटोसिन लागि गला ए जगह रे टी लागि गला या फिर जी जगह रे सी लागि गला और जी जगह रे टी लागि गला और ए जगह रे सी लागि गला बेले ताके कहमा में काम वाली करी ट्रांसवर्सन म्यूटेशन बोली करी कहमा ओके बट हम और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन रे काना हम टोटल डीएनए रे जे सीक्वेंस अछि से सीक्वेंस रे माने कर AATTGC थिला AATTGC थिला बट से जगह गोटे एडिशन हेजबा मजा पार्ट रे के ऑकेंसी जगह रे AATTGC थिला बट AATTTGC हे गला से जगह रे काना हम टोटल फ्रेम ऑफ द डीएनए चेंजेस हेजबा डिस्कस करमा एतर बाबत रे इना मोर डीएनए रो सीक्वेंस रे चेंजेस हेजबा डीएनए रो सीक्वेंस सबुनो डीएनए रो सीक्वेंस रे चेंजेस हेबा बट हमर जन फ्रेम अच्छे से फ्रेम रे चेंजेस हे जिबा डिस्कस करमा डिटेल्स वन बाय वन पहला हमें एनुप्लॉइड रो स्टार्ट करमा पूरा एंड करमा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन रे ओके इटा गला डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द म्यूटेशन आज हमको डिस्कस करबार तला जस्ट हाउ व्हाट इज दैट म्यूटेशन तार इंट्रोडक्शन बाबत रे मैं डिस्कस करबार के चाहूतली ओके एंड डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट बेसिस रे हमें डिफरेंट टाइप रे डिवाइड कला में म्यूटेशन के ओके एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली क्वेश्चन ऐसे हमर जीन म्यूटेशन हला कि जीनोमेटिक म्यूटेशन हला या फिर क्रोमोसोमल एबरेशन ई तीनटा थ्रू बेसिकली क्वेश्चन ऐसे भूलबार के ट्राई न करबो इटा के जन रहला हमर इटा के तुम्हारा मैप बने दे माइंड रे मैप करी करी आसा नेक्स्ट क्लास रे हमें स्टार्ट करमा केनु एनुप्लॉइड रो तापरे यूप्लॉइड बाबत रे डिस्कस करना तो आई थिंक नेक्स्ट क्लास रे एनुप्लॉइड यूप्लॉइड ही हमको पढ़वार अछि तापरे हमें जिमाकेन के क्रोमोसोमल एबरेशन तापरे जीन म्यूटेशन ओके सो आई थिंक समझते अजिरटा बुझी पारी थिबो इफ एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप फॉर योर any kind of doubt you may ask there okay so please like share and subscribe our channel thank you